So, good evening to all. So, in this live streaming, we'll discuss what is list and also we'll learn how to find out the error, find out the output. First of all, I want to wish you all happy Dashera. So, in this Dasera, this is a really gift for all of you to have a discussion regarding list. This is the first part I am doing. In the next part, I will tell you regarding the programs. The best part of this video is that we will learn few concepts, hidden concepts of your list. If we can understand the list properly, we can write the program quite comfortably and easily. So let's start our process. First of all, good evening to all of you. So we'll start with the first part. Now, some of the theoretical part we should know, out of which the first one is, I'm saying that list is used to store a collection of a sequence of values. Now, what is this collection of values? Now, a variable can store one value only. But if I want to store more than one value, then the previous value is going to be overridden by the new one. So I cannot get back the old value. So in order to avoid these kind of things, we are looking for a list. Now it is called collection because more than one element can be stored at the same time in a list. Now why it is called sequence? Because whatever data that we are going to retrieve or we are going to store in a list is a sequence manner. That means one after another. That is called linear list. That's why it's called linear list. Now the next point says that list is a collection of heterogeneous data element. Why it is called heterogeneous data element? Good evening. Good evening, Nayan. Yes, good evening. Now, why it is called heterogeneous? Because in a list we can store different data types. That means I can store integer, I can store float, I can store string. With the same list I can store. That is the best part of this. The next point says that list elements are enclosed within square bracket. Why it is required? Because if I am going to use parenthesis, then it will become my tuple. If I am going to use curly bracket, then it is going to be my dictionary. But if I am going to use square bracket, then it becomes my list. Now, the next point, we're moving towards the next point. It says that each element of a list referred by an index position. As we know that when you're going to retrieve the data from a list, we have to retrieve it with the help of your index position. Now, what is this index position talks about? Now, each element of a list is referred by an index position. The index position can be 0, 1, 2, 3 in case of positive indexing. In case of negative indexing, it is -1, -2, -3. I will clearly have a discussion regarding this. Okay. Now, more than one element can be accessed with the help of slicing. What is called slicing? If I am giving an index position, I can retrieve only one element. But if I am using the slicing, I can extract more than one element from the list. Now, let's have a small look at this. What is called this slicing? Okay. Now, I'm showing you. Look at this. Suppose I'm having a list is equal to 10, 20. I'm saying it can contain heterogeneous data element also. This 56.23. Now, when I'm saying print li of one position. Now, this is my 0 position. This is my 1 position. So that's why it will display 20. Look at this. I'm getting the output called 20 over here. Got it? But when I'm going to use slicing, I'm saying 1:3. This is called slicing. Starting is included and is excluded. Excluded matlab 2. So 1, 2 it will display. That is, this is 0,
This is 1 and this is 2. These two output will be displayed. This is called slicing. That means more than one element can be retrieved with the help of your slicing. Good evening to all. Now let's go back to our slide for the next point. So next point says that list is mutable. What is this mutable is called? That means if I want to change an element of a list, then it is called mutable. Immutable, it's reverse one, that if it is not allowing me to change an element of a list, then it is called immutable. Look at this. Li of 2 position is equal to, I am saying check. Now before this I am using a print statement to display what is there in a list. I am saying print the list. After changing, I am saying display the list. Look at this. Before it is 1020, this 56.23. Then after it is 1020 check. This is converted into check because this is 0, 1, 2 position. Now the peculiarity of this is that when I am using index position on the left hand side, it is used for assignment. When I am using it in the right hand side, this is used to perform the operation or to extract the data. Right hand side is used to extract the data. Left hand side, if I am using, then it is going to take the data from the list. The next is syntax. Now list name, I have to give a list name. After that, within square bracket, I need to give the values which is separated by the comma. Now look at this. Like this, I can create an empty list. So many times we may need to create an empty list. For that, I will give the list name. Then after that, I will give empty square bracket. So that will create an list for me. Look at this. My list is the list name, empty square bracket will help me to create an empty list. Now this is I'm creating using constructor. The right hand side is called constructor. With the help of constructor, I'm creating an empty list. Now this is the list used with the integer value. This is with the string value. This is with mixed value. Integer, string, float, character, everything is mixed over here. But next one is called nested list. What is called nested? If a list contains another list, then it is called nested list. If a tuple contains another tuple inside it, then it is called nested tuple. So we have to concentrate on the nested. So which one is the nested one? This is my inner list. This is my inner list. And this one is my outer list. Outer list. So this is my 0 position. This is 1 position. This complete is my 2 index position for the outer. And this is my 3 index position. Now inside this, we have this one is 0. This one is 1. Okay. I will emphasize on this one later on. So next, let's see. Suppose we have a list. Now these are my positive index and these are my negative index. This is most vital to retrieve the data from a list. Now if I want to retrieve data from a list, this is most vital for us. List inside list. Excellent. Like this, if you will make it interactive. Sir, Hindi please. I am from St. Vincent Convent School. Okay, fine. Somehow बीच में मैं थोड़ा हिंदी भी यूज कर लूंगा. Okay. So look at over here. These are called positive index. Positive index always starts from 0. And set last index is always length minus 1. ये लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4. That means length of the list is 4. But negative index always starts from -1 and set length of the list. So length of the list is 4. So negative index is 4. So let's have few points about this. Positive first index is always 0. Then negative first index is always length of the list. Look at this. मैंने क्या कहा था आपको? Length is equals to number of element in the list.
Okay, so that's why your negative index is your length. That is your number of element. Next, positive last index is your length of the list minus 1. लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या है यहां पे 4 है. नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लिस्ट. नाउ लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है -1. नाउ नेगेटिव लास्ट इंडेक्स क्या होता है लेंथ होता है. नेगेटिव लास्ट इंडेक्स दिस वन इज योर लास्ट, दिस वन इज योर फर्स्ट, दैट इज योर -1. number of elements in the list is always equivalent to length of the list. Now how to accept data in a list? Now I will show you why we need eval. eval क्यों यूज करते हैं हम लोग? डायरेक्टली हम लोग डाटा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? Look at over here, I am showing you. Suppose I am saying li is equal to input enter 3 numbers. Look at this. ये कैसे डाटा स्टोर करेगा? अभी हम बोलते हैं उसके बाद प्रिंट लिस्ट. ओके, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. इट इज आस्किंग फॉर 3 numbers 10. Look at this. Enter 3 numbers. It is I have entered 3 numbers means I need to give it in 3 times. Now but it is taking only 1 time. So how to take the data? That is 3 elements. So let's run it again. So what I am doing now, in order to give 10 elements, I am giving this like 10, 20, 30 like this. Now look at this. We got 10, 20, 30. Is it clear? But is it in the form of, क्या ये इंटीजर के फॉर्म में है? थोड़ा चेक कर लेते हैं. R is equal to li. I am saying li of 0. Okay, so look at this. फिर से दे रहा हूं मैं यहां पे आपको इनपुट 10, 20, 30. Look at this. R is equal to li of 0. अच्छा, I have to display R. R को डिस्प्ले करने से आपको पता चल जाएगा. I am saying R. 10, 20, 30. Look at this. It is storing 1. क्यों ये 1 स्टोर कर रहा है? कुछ समझ में आया आपको? It is taking the data in the form of string. अब ये स्ट्रिंग के हिसाब से डाटा ले रहा है. आपको लग रहा है कि लिस्ट के हिसाब से ले रहा है, बट एक्चुअली ये लिस्ट के हिसाब से नहीं ले रहा है. ये ले रहा है डाटा आपका स्ट्रिंग के हिसाब से. इसीलिए यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है. नमस्कार सर, नमस्ते नमस्ते. अब if I'm using eval over here, eval, okay, I'm executing again. I'm giving the data 10, 20, 30. Look at this. Now ये कैसे दे रहा है आपको? टपल में दे रहा है. क्यों दे रहा है टपल में? Because the number that I have entered is separated by comma. In Python, if the values are separated by comma, then it becomes an टप्पल. अब ये देखो यहां पे R में स्टोर हो रहा है आपका 10. इज इट क्लियर? अगर मुझे लिस्ट में डाटा एक्सेप्ट करना है तो व्हाट शुड आई गिव? और आई सेड स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30. Look at this. Now I got the data in the form of list. अब चलो देखते हैं ये सचमुच लिस्ट में लेता है क्या? टाइप ऑफ li. नाम से टाइप ऑफ li. ये li का डाटा टाइप क्या है? I'm giving some numbers over here. Look at this. It is of type list. अगर मैं यहां पे सिर्फ दे रहा हूं 10, 20, 30. 10, 20, 30. Look at this. It is saying tuple. Okay. Now understood the mechanism of your eval? और देखते हैं. Now eval can be used to execute an expression in the form of string. आप कुछ एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में दोगे, वो उसको इवेल्यूएट करके देगा. Look at this. 10 plus 20 is equal to 30. It is giving
द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ 30। ये कैसे दे रहा है? 30 क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इवोलेट कर रहा है, 10 + 20 आपका स्ट्रिंग में है, वो कन्वर्ट करवा रहा है उसको इंटीजर में, फिर ऐड करके उसको दे रहा है। नाउ आई एम सेइंग 10 + 2.5, इट इज सेइंग 12.5। arithmetic operation can be done, but if directly I will give 10 + 2.5, now I am showing you, अगर directly हम दे रहे हैं उसको 10 + 2.5, if I am giving over here print 10 + 2.5, उसको कोट्स में दे रहे हैं हम लोग, और एक दे रहा हूं मैं eval के साथ, print eval, now you will get the difference। 10 + 2.2 directly आ गया आपका और the string concatenation, but here I got 12.2 physical addition of the number। So let's see the next one, eval 10 + e। अब क्या होगा? फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड वन इज अल्फाबेट। नंबर कैन नॉट बी एडेड विथ अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट एडिशन नहीं हो सकता, इसीलिए वो एरर देगा। नाउ eval 10 + 2.5 j, नाउ j इज यूज्ड, बोल सकते हो आप j क्यों यूज हुआ है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, j इंडिकेट्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ आई एम यूजिंग a complex number with an integer, the output is not added, it will again display 10 as an integer, 2.5 as an complex number। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को eval में यूज कर रहे हो 2.5 फ्लोट के साथ, फिर भी ऐड नहीं होगा, वो क्या करेगा? फ्रैक्शनल पार्ट पहले दे देगा, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिजिकल एडिशन नहीं होगा। बट अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हो ऐड करने के लिए eval में, तब जाके ये ऐड कर सकता है। So my intention of showing this over here is that in case of eval, I can add two integers. I can add integer with fractional value. But if I'm using complex number को complex number के साथ ही add किया जा सकता है eval में, उसको ना integer ना look at this integer के साथ float के साथ उसको add नहीं किया जा सकता। और character obviously सबको पता है, character add नहीं हो सकता integer के साथ। Now look at this, var is equal to eval, input enter data, suppose user has entered 100, यूजर ने क्या एंट्री किया? 100 एंट्री किया यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा? a + b फॉर्म। सर टपल मीन्स, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय टपल? जस्ट लाइक लिस्ट, टपल इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ डाटा, बट इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, लिस्ट में आप किसी एलिमेंट को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट टपल में आप चेंज नहीं कर सकते। आई विल शो यू व्हाई इट इज एडिटेबल, व्हाई इट इज नॉट एडिटेबल इन केस ऑफ टपल। वो टपल और एक चैप्टर होता है, वैसे लिस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टपल डिस्कशन करेंगे। ओके, सो प्रिंट var, टाइप ऑफ var, व्हेन आई एम सेइंग टाइप, तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है, which function is used to display the data type of a variable? The method name is your type. So type of var will display you integer because integer data is inputted. Now again I'm inputting data 100, 20। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था comma separated value entered by the user is treated as dash। Let me see how many of you can able to answer it। What will be the type of this? Already I told you, comma separated values, comma separated values in Python is called dash। ये क्वेश्चन आता है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एबल टू आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका डाटा टाइप क्या आएगा? यस, इसका डाटा टाइप आएगा tuple। Look at this, we got tuple। Now next one, eval input 3 subject marks। Now here I am inputting 3 subject marks। When I will print it, though the data is inputted using square bracket,
So that's why the output is in the form of list. But here data is inputted with separated by comma, that's why it is in the form of tuple. Now like string, we can also use membership operator in and not in. Look at this first one, T in this. What is this membership operator is called? Membership operator says that whether a particular data is available in another list or collection or not. Now here it says that T in this, T this के अंदर है या नहीं है, ये चेक कर रहा है in का मतलब. So T is available in this, so that's why it is saying false. Now why it is saying false? Who can say? T तो यहाँ पे available है आपका, it should display true. Why it is displaying false? Now I will show you why it is displaying false. क्योंकि आपका ये जो T है ये सिंगल एलिमेंट है. ओके, नाउ लिस्ट में ये सिंगल एलिमेंट है, तो T इज इन दिस कंप्लीट वन. सो ये दोनों सेम नहीं है, T और दिस सेम नहीं है. अगर ये वाला आपके लिस्ट में ऐसा होता, लुक एट दिस, आई एम शोइंग यू, अगर ऐसा होता T कॉमा H कॉमा I कॉमा S, अगर ऐसा होता लिस्ट में तो ये आपका ट्रू आता यहां पे. क्यों? बिकॉज T इज अवेलेबल इन दिस लिस्ट. Hope I'm clear to everyone why it is displaying false. Because T is a character and other one is a list. Yes, somehow your answer is correct, beta. But if the data elements, here what it is saying that a particular element is available in a collection or not. But in the previous case, T is compared with this, THIS. Now here T is compared with T is compared with H, T is compared with I, like this. So that's why it is displaying, in this case it will display true. Now look at this, T in this. अब तो पता चल गया आपको, यहाँ पे आपका आ गया true, because T is available in this collection. The next one, 11 in range 15. Who can say? What should be the output? 11 in range. Let me see how many of you have understood this one. These are all 2 marks question for find out the output. Find out output में आता है 11 in range 15. No one? Now let's see what is range. अर्पिता पटनायक said true. बाकी सारे बच्चों का क्या हुआ? ट्रू है कि फॉल्स है? यस, प्रगति से इज ट्रू. गुड. क्यों ट्रू है? क्योंकि ये रेंज बोल रहा है. रेंज में 3 पैरामीटर जाता है, दैट इज योर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. स्टार्ट if it is not given, by default it is 0. Stop is your 15 given, that is excluded, that means up to 14 it will go. And step is missing, by default it is 1. So that means it will generate values between 0 and 15, that is your 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, like this. And 11 is available in this range. So that's why it will display true to you. So let me erase this one. This will display true. Next, 11 in range 11. Let me see how many of you can answer this. 11 in range 11. देखते हैं कितनों को समझ में आ गया. अभी जस्ट 1 minute बिफोर आई टोल्ड अबाउट रेंज. 3 पैरामीटर रेंज का मैंने बताया था. अगर वो 3 पैरामीटर आपको समझ में आया है तो ये आपका आंसर सही जाएगा. अगर नहीं गया, false and false. Why don't other candidates give your answer? I should know that how many of you have understood. कितने बच्चों को समझ में आ रहा है मुझे जानना है. बस आंसर दो बेटा, गलत हो सही हो, I don't mind.
बट दिस क्लास मस्ट बी ए इंटरेक्टिव वन, क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए. ओके, so you have understood why, because 11 is excluded and it will move up to 10, 0 to 10, it will generate the numbers between 0 to 10. So let's see next one. T not in this. Quickly give me your answer. T not in this. इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा क्या फॉल्स आएगा? नाउ नॉट इन, जस्ट रिवर्स ऑफ इन. इन का उल्टा काम कर रहा है नॉट इन. दिस जस्ट लाइक नॉट गेट हम लोग यूज कर रहे हैं उसी तरह. यस, टी नॉट इन टी. यस ट्रू, बिकॉज क्यों आ रहा है देखो आप यहां पे टी इज नॉट अवेलेबल इन दिस. अगर ये एक एक एलिमेंट होता तो आपका होता. यस, आप लोगों ने ट्रू बताया. यस यस, इट इज नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल. This is true. Okay. Next one. T not in this, but T is available in this. So that's why it will say true. उल्टा हो गया है बेटा, ये उल्टा हो गया, ये पूरा उसका आ गया है. This is your T not in. This is your false, क्योंकि ये अवेलेबल है इसके अंदर. ओके, 11 नॉट इन रेंज 15. ये सारा उल्टा आ गया है, ये आपका आ गया फॉल्स. ठीक है ना. 11 नॉट इन रेंज, यस दिस इज ट्रू आएगा. ये सारा ये वाला कॉपी हो गया है आंसर यहाँ का. ये आएगा आपका ट्रू. ओके, नेक्स्ट. लाइक स्ट्रिंग वी कैन यूज द प्लस ऑपरेटर. स्ट्रिंग में जैसे आपका प्लस ऑपरेटर यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, उसी तरह यहां भी प्लस ऑपरेटर यूज होता है. दिस प्लस दिस, आंसर आएगा आपका दिस इज कॉल्ड योर कॉन्कैटिनेशन. नाउ लाइक दिस वी कैन यूज दिस प्लस इज. नाउ लुक एट दिस लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, राइट हैंड साइड लिस्ट में दो एलिमेंट है. आप इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो. ये एक थर्ड लिस्ट बनाएगा जिसमें दिस आई एस तीनों आ जाएगा. कैसे होता है वो? राइट हैंड साइड लिस्ट इज एडेड विद द लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट. द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन अ लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट. और वी कैन से प्लस ऑपरेटर एड्स द न्यू लिस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट लिस्ट. फर्स्ट लिस्ट के एंड में रखता है. ये फाइंड आउट का आउटपुट में आता है क्वेश्चन ये आपका. टी प्लस एच आई एस, तो आपका ये कैसे? स्ट्रिंग इज एडेड विद द लिस्ट. ये एरर आएगा क्योंकि लिस्ट कैन बी कॉन्कैटिनेटेड विद द लिस्ट, स्ट्रिंग कैन बी कॉन्कैटिनेटेड विद द स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग कैन नॉट बी कॉन्कैटिनेटेड विद द लिस्ट. ये एक ध्यान देना बेटा, आउटपुट बाद में आता है आपका. नाउ 1 2 प्लस 15, ये आपका लिस्ट है, ये आपका नंबर है, इंटीजर है. अगेन इट विल शो यू एरर बिकॉज लिस्ट ओनली कैन बी एडेड विद द लिस्ट. Now replication operator, this multiplication can be used for your arithmetic multiplication and also used for replication. Now this multiplied with is, दो स्ट्रिंग का आपका प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता. That's why it will show an error message. प्रोडक्ट इंटीजर में हो सकता है, but if I'm using a list is multiplied with another list, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि लिस्ट इज एन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इट कैन नॉट बी एडेड विद द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. रिप्लिकेशन हो सकता है. यहां पे अगर मैं दिस इज के बदले यहां पे मैं 2 दे दूं तो क्या आएगा? दिस 2 बार रिपीट होके आएगा. नाउ लुक एट दिस, स्ट्रिंग इज मल्टीप्लाइड विथ लिस्ट. अगेन इट विल शो एन एरर मैसेज बिकॉज यहां पे जो पैरामीटर जाता है एक लिस्ट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, तब जाके सही रहेगा. अब ये सही है. लुक एट दिस, ये सही है. एक लिस्ट है, एक नंबर है, या फिर एक नंबर एक लिस्ट होना चाहिए. तो 1 2 विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स. रिप्लिकेशन 1 2 1 2 1 2 3 टाइम्स ये रिपीट होगा आपका. ये रिप्लिकेशन बोलते हैं और क्रिएट्स अ डुप्लीकेट फॉर्म.
नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एक लिस्ट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टार हैश 2 बार आएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कॉल स्लाइसिंग, जो ज्यादातर प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं, स्लाइसिंग। चलो देखते हैं ये स्लाइसिंग में क्या होता है। नाउ लुक एट दिस, आई हैव नेगेटिव इंडेक्स, आई हैव पॉजिटिव इंडेक्स। नाउ लुक एट दिस, s of 1. So this is a valid index position. The first index position contains hatch. I'm using positive index, so output will come hatch. Now s of 20, if I'm giving an invalid index position, it will show an error message, क्योंकि 20 index position है ही नहीं यहाँ पे। Index position is, my last is 9 and 20 index position is not available. So because of that reason, it will show an error message. Now st of 2 colon 5, 2 is the starting which is included, 5 is the ending which is excluded. So यहाँ पे देखो 2 index position से 4 index position तक जाएगा, 5 is excluded, 5 include नहीं होता है इसमें क्योंकि end is excluded. Now step value is missing, और I said that ये 3 पैरामीटर लेता है, 3 पैरामीटर लेता है, start, stop and step. Start default is 0, stop default is your length or last index position, and step is your positive one. Though step value is not available over here, it will move 2 to 4. So that's why I as I आएगा. Now -8 to -2, -8 to -2 जाएगा, ये -2 तक जा रहा है. Okay, this range it is saying. Now no step value is given, so that means positive one. That means look at this, ISSDEM. Now why it is not displaying M? Who can say why it is displaying up to E? Because I have to move up to -2 over here, because here -2 is given. Now why it is not displaying M? Who can say why I am not getting M in my output? Why character M is not available in the -2 will not be included, yes, in the output. Good, because -2 is excluded, that means it will move up to -1 or -3. Which one is going to be counted, -3 or -1? पॉजिटिव में लेफ्ट में जाता है, तो -2 इज एक्सक्लूडेड, मतलब इट विल मूव अप टू -3, दैट इज योर E. नेक्स्ट वन, -9 to -3. लेट मी क्लियर दिस वन. -9 which is included, this one -9 is included. Now -3 which is excluded, मतलब it will move up to -4. तो इस रेंज में जाएगा, बट स्टेप वैल्यू इज 2 ओवर हियर. स्टेप वैल्यू इज 2, दैट मीन्स आई विल गेट दिस हैच. नाउ 1 2 दो स्किप हो गया, ये 2 स्किप हो गया अभी यहाँ पे, तो फिर आएगा आपका एस. अब एस से फिर 2 स्किप होगा, फिर आएगा एस. लाइक दिस वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट. लुक एट दिस. और एस उसके बाद तो ये एक्सक्लूड है, ये दोनों गया, एच एस एस. Got it? How we are using -2 is excluded, yes. Now have you understood this one, step 2? Just give me your confirmation, have you understood step 2 कैसे किया गया? So next you tell me -2, -5, -1. Send me your answer. Let me see how many of you have understood. Send me your answer. Send me your answer for this one. -2, -5, -1. -2, -5, -1. आउटपुट क्या आएगा? चलो देखते हैं ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे.
ये स्लाइसिंग में है। जैसे मैंने बताया था, -2 को इंक्लूड करो, -5 को एक्सक्लूड करो। अब स्टेप -1 बोल रहा है ये, ERR एरर। नो, इन केस ऑफ स्लाइसिंग अर्पिता एरर नहीं आता है। इन केस ऑफ इंडेक्स ओनली इट विल शो यू एरर मैसेज, एरर नहीं आएगा। लेट मी सी व्हाट अदर्स आर सेइंग। स्लाइसिंग में एरर नहीं होता है, आउटपुट कुछ नहीं आ सकता, एम्प्टी लिस्ट आ सकता है आपका, आउटपुट एरर नहीं आएगा। आप कोई भी इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन दे दो इसमें, स्लाइसिंग में एरर नहीं आता है। कोई और ट्राई करना चाहता है? क्या आता है आपका आउटपुट? ओके, लुक एट दिस MED। लेट मी क्लियर दिस वन, आई विल एक्सप्लेन यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, फाइंड आउट द आउटपुट में। -2 इज इंक्लूडेड, लुक एट दिस -2। So let me start with this. -2 is included. Okay. Now -5 is excluded. मतलब ये कहां तक जाएगा? माइनस कहां तक जाएगा? -4 तक जाएगा। इज इट क्लियर? तो किस ऑर्डर में जा रहा है? रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, माइनस रिवर्स ऑर्डर, एक स्किप हो रहा है। तो M आपका आउटपुट देखिए, यहां पे आपका M आ गया ना, -2, फिर -1 हो गया तो -3, फिर आपका आ गया ये -4। अब उसके बाद -5 इज एक्सक्लूडेड। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस, प्रगति बेहरा, एक्सीलेंट प्रगति, फाइन, गुड जॉब। लेट मी सी दिस वन, ट्राई करो अभी इसको। 8 to 2 स्टेप इज मिसिंग सर, लेकिन पीछे से तो स्लाइसिंग नहीं हो सकता है। यस यस यस, वी कैन हैव, यस वी कैन हैव अर्पिता, बिकॉज वी हैव फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, वी हैव बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आप फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। अभी अब थोड़ी देर में एग्जाम्पल है, आपके समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन भी दे दूंगा आप लोगों को। लास्ट में मैं कंक्लूजन दे दूंगा किस केस में आपका आउटपुट नहीं आएगा, किस केस में आपका आउटपुट आएगा। ट्राई दिस वन, प्रिंट 8:2। और दो एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा अर्पिता, एक्चुअली ये ट्रैवर्सिंग कैसे करता है, स्लाइसिंग में ट्रैवर्सिंग कैसे होता है। ये ट्राई करो अभी। 8 to 2 आपका आउटपुट क्या आएगा? ये सारा चीज अगर समझ में आ गया आपको लिस्ट में, तो जाके आप कंफर्टेबली प्रोग्राम लिख सकते हो। यू कैन डील विद द प्रोग्राम परफेक्टली। मस्त प्रोग्राम होगा, पूरा ध्यान देना है इसमें कैसे जाता है। एम्प्टी लिस्ट अर्पिता, यस, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपका हो रहा है अर्पिता, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप थोड़ा हड़बड़ा रहे हो। यस, इट्स करेक्ट, इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। बिकॉज देखो यहां पे क्या हो रहा है, आई एम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 8 to 2, ठीक है, बड़े से छोटे के तरफ मैं जा रहा हूं। तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए स्टेप। 8 - 1 7 6 5 4 3 2, बट आपका यहां पे माइनस स्टेप वैल्यू के बदले +1 है। तो 8 + 1 is 9 10 11, like this. In this direction it is moving, so that's why we are going to get empty list. Good. ये वाला ट्राई करो, -2 to -5। अर्पिता ये ट्राई करो नेगेटिव में, -2 to -5। आपका इसमें नहीं हो रहा था ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग में। नाउ यू ट्राई दिस वन, you will be clear now. -2, starting index is -2, ending index is your -5. Now if I will travel like this, then how I can get it? अगर ये आउटपुट आप 3-4 आपसे हो गया तो सोच लो कि आपका स्लाइसिंग क्लियर हो गया। -2 to -5, empty list. Arpita says empty list. What about others?
यस एम्प्टी लिस्ट, दैट मीन्स गॉट इट। एम्प्टी लिस्ट क्यों आ रहा है अभी, थोड़ा मैं आपको क्लियर करवा दूं। -2, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, -2, कलर थोड़ा चेंज कर लो आपके लिए, -2 टू -5, और आपका इंडेक्सिंग क्या है, स्टेप वैल्यू इज +1, स्टेप वैल्यू आपका +1 है। तो -1 जब एड हो रहा है, -2 +1, रिजल्ट इज क्या आ रहा है, -1, फिर -1 प्लस -1 स्टेप वैल्यू इज 1 +1 बिकम्स योर 0। तो ये इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड तरफ जा रहा है, बट मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए एम्प्टी आ रहा है। यस अर्पिता, स्टेप इज +1, गुड। नाउ ट्राई दिस वन, 5 to 3, 5 to 3, step is -1. Five to 3. Now step is -1. Step value is your -1. Five is this one. 3 is excluded. मतलब कहां तक जाएगा वो, एंड आपका स्टेप -1 है अभी। 5 -1 आपका क्या आता है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, योर SI, गुड, SI। ना प्रगति, perfect answer। Arpita, SI should be in a square bracket separated by comma. Is it clear? Be careful about the answer because this is find out the output. Find out the output में perfect answer होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट से स्लाइस हो रहा है तो लिस्ट में ही आंसर आएगा आपका। एन एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, though it is the list, it has to be included in the square bracket. Next one, list of 8:50, 8 to 50. Let's see, 8 to 50. Step +1 यहाँ पे, but 50 is not available. 50 is not available. Initially मैंने बताया था आपको, प्रगति, आई ऑलरेडी टोल्ड, स्लाइसिंग में आपका एरर नहीं आता है। मैंने 3 पैरामीटर इसका बताया था, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, MO। ओके अर्पिता, लेट मी सी, 8, यस गुड, अर्पिता इज राइट। इफ एंड इज इनवैलिड और एंड इज नॉट गिवन, बाय डिफॉल्ट इट इज एंड ऑफ द लिस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो एंड ऑफ द लिस्ट में जाता है। लेट्स सी, 8 कॉलन नथिंग, 8 कॉलन नथिंग। अगर कॉलन में ना दूं तो वो इंडेक्स हो जाएगा, अगर कॉलन दे रहा हूं तो वो क्या आता है आपका, स्लाइसिंग में आता है। बिना कॉलन के आपका क्या जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। 8 कॉलन एंड इज मिसिंग। अगर एंड आपका अवेलेबल नहीं है तो क्या ये एरर आएगा, आउटपुट आएगा। So again it is given the answer called MO by Arpita, yes। So the last one, start is missing, column 3, start is missing and column 3। If you can able to answer this one, that means you have understood। मैं फिर इसके बाद आप लोगों को कंक्लूजन दे दूंगा कि आपका किस केस में आएगा, किस केस में नहीं आएगा। 3 मतलब 2 तक जाएगा, 2 मतलब स्टार्ट इज मिसिंग, नो 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 प्रगति, ट्राई इट अगेन। इफ स्टार्ट इज मिसिंग, व्हाट इज द डिफॉल्ट वन। अगर स्टार्ट आपका मिसिंग है, डिफॉल्ट क्या है आपका,
वो सोचो. 3 is your end. Arpita, THI. Yes, 3 is given, that means it is excluded, means it will move up to 2. That's why we'll get 0, 1, 2 index position. So we'll get THI. Okay. So let me conclude. देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग बड़ा है, एंडिंग छोटा है, आई एम गिविंग द कंक्लूजन. स्टार्टिंग बड़ा है, एंडिंग छोटा है. अगर स्टेप वैल्यू प्लस है, प्लस में है, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. अगर स्टेप वैल्यू माइनस में है, यू विल गेट आउटपुट. इज इट क्लियर? वैसे नेगेटिव में माइनस figure, that means -2 is bigger than -5, we all know. So that means अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, राइट हैंड साइड छोटा है और आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव स्टेप वैल्यू है, आउटपुट नहीं आएगा. माइनस में है, आउटपुट आएगा. तो दिस इज द कंक्लूजन. अगर आप इसको पकड़ के चलोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. यू कैन एबल टू नो इन विच केस यू विल गेट द आउटपुट, इन विच केस यू विल नॉट गेट द आउटपुट. So let's see this one. Now when I'm saying nested list, this is your nested list. मैंने कहा था ना हर एक एग्जाम्पल इसके अंदर आपके लिए अवेलेबल है. अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नेस्टेड लिस्ट. दिस इज माय नेस्टेड लिस्ट. ओके, इसका इंडेक्सिंग थोड़ा समझो. आउटर लिस्ट का ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2, 3, 4, 5. दिस कंप्लीट वन, लुक एट दिस कंप्लीट वन is index position 5 for outer index, but for inner index it is 0, 1, 2. inner index में ये 0, 1, 2 है. अगर इसको समझ में आ गया ये इंडेक्सिंग, तो आपका नेस्टेड भी काम कर जाएगा. ठीक है. अब आउटपुट कैसे आता है? STU ऑफ 0 में क्या है आपका? प्यारी है, इसीलिए आपका यहां पे आएगा प्यारी, फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन देखिए, STU ऑफ 1. पहले ये वाला देखिए, आउटर इंडेक्स 1 मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दिस वन, 1 इंडेक्स पोजीशन. नाउ 1 का क्या चाहिए मुझे? 1 का 0 इंडेक्स पोजीशन चाहिए. विच वन? दिस वन. तो इसीलिए आपका आउटपुट आ रहा है यहां पे 80. तो STU ऑफ 1, तो दिस वन इज STU ऑफ 1, दिस वन. इसमें से कौन सा चाहिए? 1 इंडेक्स पोजीशन. इसका 1 इंडेक्स पोजीशन ये आ रहा है. Like this, 1 का 2 index position, that means 99. Okay, so let's see. Write a program to display the name and marks of the student in the above list. ये ऊपर जो आपका लिस्ट है, इस लिस्ट में से मुझे हर एक स्टूडेंट का नाम और मार्क्स डिस्प्ले करवाना है. तो ऑब्वियसली आई नीड ए लूप, क्योंकि दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, बट आई वांट टू डिस्प्ले 3 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. So I need a loop where I'm using the range function. Range function contains 3 parameters. Start. This is your start. This is your stop. This is your stop. And this is your step value. This is your step value. Okay. Chalo, quickly. If you have understood, then tell me. रेंज फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर स्टार्ट क्या होगा? इफ आई वांट टू डिस्प्ले द अबव लिस्ट इंफॉर्मेशन, देन व्हाट शुड बी? बताओ, व्हाट शुड बी माय स्टार्ट? व्हाट इज स्टार्ट वैल्यू फॉर रेंज? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंडेक्सिंग के बारे में बताया. इफ यू हैव अंडरस्टूड, देन इट इज ओके. नार्पिता सेज इट इज 0. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रगति सेज 0. गुड. नाउ स्टॉप वैल्यू. स्टार्ट के बाद अभी स्टॉप बोलो. व्हाट इज स्टॉप वैल्यू? मुझे एंड तक जाना है, एंड ऑफ द लिस्ट.
Nayan, yes, Nayan says it is 0. Fine, this is your start value. I'm asking about stop value. Now I'm asking about stop value. स्टॉप वैल्यू क्या होगा अभी, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे जरूरत है तीनों का. प्रगति says it is 6. Yes, I can give 6, but always try to give the function called length of the list. It's a good practice. वरना आपको गिनना पड़ेगा एग्जाम में. एग्जाम में आप थोड़े ना गिनोगे 0 1 2 3 like this. The best way is you will give length of the list. None says 6, sir. Always try to give the function which will automatically calculate the thing. Now, what is the step value now? Step value in a range. अब स्टेप वैल्यू क्या होगा, या फिर आपका स्टेप डिफॉल्ट जाएगा. डिफॉल्ट इज योर 1, पॉजिटिव 1. अर्पिता says +2. यस, कन्विंस्ड. क्यों जाएगा, क्योंकि लुक एट दिस, 0 है, उसके बाद आपका मार्क्स है. दिस इज कंप्लीट ए लिस्ट. नाउ 0 के बाद डायरेक्टली आई एम जंपिंग टुवर्ड्स द सेकेंड नेम. सो दैट मीन्स स्टेप 2. 1 2, स्टेप 2 चाहिए. गुड. Now let me clear this one. Now name of STU of what? I want to display name. तो आप यहाँ पे आपका इंडेक्स पोजीशन क्या आ जाएगा? Send me the index. Quickly send me your index. Send the index position for name. अब D is storing an element from the list. Now the element index position क्या होना चाहिए आपका? 0 से, अब C is nothing but आपका D में क्या होता है, इंडेक्स पोजीशन होता है 0 1 2 3 4 like this. अर्पिता पटनायक says 0 2 4. No. What should I use? No. What should I use? You have not understood. What should I use inside the square bracket? Sujal, no. My question is that, look at this. STU of square bracket is empty given. Square bracket अभी उसमें खाली है, उसमें क्या लिखूं मैं? उसमें 0 1 2 4 क्या लिखूं? 0, 2, 4 तो नहीं लिख सकता मैं. Sir, we can also write D. Yes, that is my answer. I am looking for the variable. I will use variable over here. Now, I want to display the math mark. Yes, good. Now, I want to display the math mark. What should be inside the square bracket to display the math mark? Achha, Sujal, this is the previous answer, D. Got it? I have already shown you the answer. Now I want next one. I want to display the maths mark. मुझे मैथ्स का मार्क्स दिखाना है अभी. उसके लिए स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? What should be my starting index and index? Because starting index is the outer one and the next square bracket is for your, yes, Arpita Patnaik, you are right, D plus 1, because when D is 0, D plus 1 is your 1. That means it will refer to the marks, this one. Now step 2. Step 2 matlab next time it will be 2 now. It will be 0, 2,
and 4 like this. Now when D is 2, D plus 1 is your 3. That is this one. Good. Now 1 का ये कौन सा पोजीशन? मैथ 0 है. So that's why it is 0. Good, Arpita. Yes, Sujal is also answering. Good. Pragati, you might have not understood this one. Now फिजिक्स मार्क्स के लिए 1 आएगा, कंप्यूटर मार्क्स के लिए आपका 2 जाएगा. यहाँ पे है, look at this, 0, 1 and 2. प्रगति, have you understood this one? लिस्ट को पहले समझ लेना है, उसके बाद प्रोग्राम में उसको वेरिएबल के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है. तो वेरिएबल के साथ उसका लॉजिक डिसाइड किया जाता है. कांस्टेंट नहीं दिया जाता है. वहां पे कांस्टेंट कहाँ दिया जाएगा? जहां पे उसका फिक्स वैल्यू होगा. जैसे कि 0 पोजीशन में, इनर लिस्ट के 0 पोजीशन में आपका मैथ मार्क्स है, तो इट इज फिक्स्ड. या फिर आपको और एक लूप लगाना पड़ेगा अंदर. एक स्टेटमेंट में अगर लिखना है आपको, अंदर और एक लूप लगाना पड़ेगा आपको. am I क्लियर? जो 3 बार जाएगा. ओके, so I will use nested for loop over here to display. क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे? चलो इस लिस्ट को ट्राई करते हैं नेस्टेड में अभी. Okay, let me take this list first of all for all of you. This one. Okay, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर मार दूँ आपके लिए. Okay, now I have created a list for you. थोड़ा इसको कन्वर्ट कर दूं मैं, क्योंकि ये स्लाइड से लिया गया है, तो ये सारा सिंबल यहाँ पे गलत आएगा. ओके, वी गॉट दिस वन. दिस इज माय लिस्ट. समथिंग फॉर डी in range. I'm saying 0, which is the default one. Length of your STU student, comma step 2. I'm saying print D. Okay, print D मतलब ये दिखाएगा 0 1 2. Look at this, 0 1 2 3 4 like this. But here I'm using the step 2. That's why it is displaying 0 2 4. Now if I am using STU of D, that means 0 to 4, only I am going to display the name. Now I am playing with the list in your code. Just look at this. Like this you have to write down the code to understand. अगर वो बोल रहा है सिर्फ नाम दिखाओ, सिर्फ मैथ्स मार्क्स दिखाओ, सिर्फ फिजिक्स मार्क्स दिखाओ, तो आप कैसे यूज करोगे? Okay, so look at this. How I am doing. If I am using D only, that means I am going to display only the name, because इंडेक्स जब आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा कोडिंग में आपको जो कुछ भी पूछेगा आप कर सकते हो अभी. ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग आई वांट टू डिस्प्ले ओनली मैथ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मैथ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो डी 0 का क्या जाएगा? आप यहाँ पे 0 अगर दे दोगे सबका मैथ मार्क्स ही आएगा. आया मैथ मार्क्स. Now you tell me why I got PST, but I needed 80. But आपका ये PST, ये वाला PST क्यों आ रहा है? Because already I have shown you this one. Already मैं ये बता चुका हूं आपको पिछले स्लाइड में. अब आपको टेस्ट कर रहा हूं आपको कितना समझ में आया है. अभी मैंने यहाँ पे D of 0 दिया, तो ये आपका PST क्यों आ रहा है? आपका 80 और 50 क्या आना चाहिए? 80 50 एंड 96 क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है कोडिंग में? बिकॉज लुक एट दिस, दिस इज 0 0, नेक्स्ट इट इज 2 0, लुक एट दिस 2 0 S 40T. दैट मीन्स नाम का पहला अल्फाबेट वो दिखा रहा है. दैट मीन्स इफ आई वांट टू डिस्प्ले
Arpita, zero index contains the name of the student. Yes. Now, that's why if I will say of 1. Okay, now tell me, I want to display the total marks of each student. What should I do? I want to display the total marks like this. I'm writing this one, D for name. Then I want to display 3 subject marks. This is for name, STUD, math marks, STU of D plus 1 of 0 of 0, this one. Now this is 1. I am saying for physics mark. Now this is for computer mark. Now in the meantime, tell me how to calculate the total. Computer mark is your 2. Now I will say print. I can write like this one, 0 plus 1 plus 2 is your total, I can say. इसके बाद मैं नेस्टेड लूप दिखाऊंगा आपको. टोटल. ओके, look at this, we got the total at the end. अब नेस्टेड लूप लगाएंगे इसमें. फॉर कितनी बार चाहिए मुझे 3 बार चाहिए. फॉर सी इन रेंज आई एम सेइंग 3. ओके, so that means now I want to display the total. Now I cannot give 3 now. I will say subject. अब दिखाऊंगा मैं subject C means subject 0, subject 1, subject 2, like this I will display. Then colon. उसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, of C. And I can use, instead of this, I can say total. बाहर ले जाएंगे TOT is equal to 0. यहाँ पे बोलेंगे TOT is equal to TOT प्लस आपका. अब 3 बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा. आप बाहर आ गए तो आप दिखाओ अभी TOT. ओके, now C in range, for C in range 0, 3. C कहीं पे यूज हुआ है. इनवैलिड सिंटैक्स P. Invalid syntax आ रहा. Let me see where we did a problem. Sum of STU of D plus 1. अच्छा, directly you are using the function. Okay. Now print subject of, यहाँ पे हमने C किया हुआ है इसको. C, this is your C, total of C plus 1. Closing parenthesis for the print. Okay, now look at this, we got it. Now Arpita says that sum of STU of D plus 1. Sum of STU plus D plus 1. Okay. So total sum of STU of D plus 1. Now it should be inside the loop or outside the loop.
Arpita, you have not told is it inside the loop or outside the loop. Sum is the built-in function provided by the list to calculate the sum of the list contains. So look at this. Now this is the mechanism of 6. This is a simple dry run. The d plus 1, when d is 0, d plus 1 is your 1. So d position will give you this one, and your 1 index position, 2 index position will give that. When d will be 2, d will be 2 because of your step value. Now d plus 1 will be your 3. Now 3 position is your Susmita. Look at this. This is, as I told you, 0. This complete one is the 1, and this complete one is your 2. So that's why the name will be Susmita. And this is your 50, 0, 1, 2 position. 0, 1, 2. Now like this, you will get rest of the things. Now using for loop, this is called your value based for loop. Value based for loop. That means if I will say for data in STU, where STU is your list. If I will say print data, look at this. One element at a time it will extract. So पहले वो निकालेगा first element, उसके बाद second element, उसके बाद third element, like this. Now when I'm using index base, अभी जो किया था हमने index base किया था, so we will get this one. I can also write index base like this also in the same line. That means your name, STU of 0, name, and the complete list. I want to display the complete list side by side. Complete list side by side. So I can get the output like this. Okay. Now the program. Write a program to extract all the even and odd elements from a list called org and store it in EVE and ODD lists respectively. That means I need 3 lists. One is org, another is EVE, another is ODD. Now display. I think I have not changed the screen. Achha. Look at this. I think screen change ho gaya. Yes, we got it. Arpita, inside the D loop. Achha, inside the D loop. Yes, got it. Now display both the even and odd list with the total and average. Now you will have original list like this. You will have the output even list like this, and you will have an output odd list like this. Okay. Now look at this. If this is my original list, now we'll make a dry run to make you understand how to do this. Initially, I need 4 counters. One is even counter, that means number of even numbers. Odd counter, number of odd numbers, because I need to get the average. Average के लिए मुझे total भी चाहिए और number of element भी चाहिए. और एक variable ले रहे e total for even total, o total for odd total. Initially all the variables are 0. सबका value 0 है. अब start करते हैं. I will generate a loop. Loop का index अगर आपका 0 है तो आपका value क्या आएगा? 4 आएगा. Look at this. I will get 4. Now 4 is even, that is true. अगर ये true है तो आपका even में store करो उसको. Even उसमें store कर दो. उसके बाद मुझे क्या करना है? काउंटर बढ़ाना है even काउंटर by 1. उसके बाद टोटल करना है. Previous total, even total plus current value. That is 0 plus 4 is your 4. Now next C value will be my 1. Now 1 position में क्या है? अभी 5 है मेरा. So I got org of C, 1 position 5. Now is it even? False. अगर false है तो कहाँ पे आएगा? Odd में आएगा. तो store it in a odd. Now after that increase the odd counter by 1. उसके बाद total में add करो उसको. Total में add करो 0 plus 5 is your 5. Next is your C value will be 2. अगर C का value 2 है तो value क्या आ गया? 15 आ गया. 15 is even false. Now कौन सा जाएगा? ऑड में आपको स्टोर करो 15. फिर ऑड काउंटर को बढ़ाओ. ऑड काउंटर का बढ़ाओ 1. उसके बाद ऑड टोटल 5 प्लस 15. करंट वैल्यू इज योर 15. करंट वैल्यू इज योर 15 प्लस 5. नाउ दिस इज योर 20. फिर सी को इंक्रीज करो. सी अभी आएगा 3.
3 में क्या है आपका 10 है, तो 10 आ गया। इज इट इवन? यस इट इज ट्रू। ना आप इवन में स्टोर करो इसको, अभी इवन में स्टोर हो गया 10। उसके बाद इवन काउंटर को इंक्रीज करो, 1 के बाद इवन काउंटर आपका आएगा 2। उसके बाद क्या करना है, टोटल करो इवन प्रीवियस 4 प्लस करंट 10। 4 प्लस 10 इज योर 14 आपका आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट सी वैल्यू, सी इज योर 4 नाउ। 4 में क्या है आपका 3 है। इज इट इवन? फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इसमें स्टोर करो आप ऑड में। फिर ऑड काउंटर बढ़ाओ, ऑड काउंटर ट्रू था, अभी ऑड काउंटर हो जाएगा आपका 3। फिर ऐड करो 20 प्लस करंट वैल्यू इज 3, करंट वैल्यू इज योर 3 इज गोइंग टू बी एडेड, सो इट बिकम्स योर 23। ना उसके बाद फॉल्स मींस ओरिजिनल एरे खत्म। आपको अभी एवरेज निकालना है। ई ए वी जी इज इक्वल टू इवन टोटल बाई नंबर ऑफ इवन नंबर्स फॉर एट काउंटर। ई वी odd average is equal to odd total by odd average. So let's start the program. Let me see. You have to quickly give me the answer. आपको फटाफट आंसर बोलना है, क्या क्या करना है मुझे। तो एक लिस्ट ले लेंगे हम लोग पहले। तो li is equal to int eval input enter the elements। ओके, अब वैल्यू आ गया इसमें। उसके बाद मुझे क्या क्या काउंटर लेना था, इवन काउंटर, ऑड काउंटर, इवन टोटल, ऑड टोटल। ओके, इज इक्वल टू सबका 0 लो, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 4 हो गया काउंटर। 4 काउंटर होने के बाद मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू नाउ। काउंटर हो गया, यस क्विकली आपका दिमाग लगाओ, क्या करना है मुझे अभी। देन काउंटर होने के बाद फॉर लूप स्टार्ट करो आप, फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ li। अच्छा, लेंथ ऑफ li में हमें क्या करना है, चेक करना है, किसको चेक करना है, आपका x वैल्यू को। तो डायरेक्टली क्यों ना हम लोग इसको ऐसे ले लें, इफ li of x modulo 2 equals to 0, if it is even I will increase the even counter, else I will increase the odd counter plus equals to 1। अब उसके साथ मुझे क्या करना, टोटल भी निकालना है। तो ई टोटल प्लस इक्वल्स टू आपको क्या होना है, li ऑफ x। अगर ये ऑड है तो आपका odd total is equal to li of x। Now when I will come out of the loop, I will display print number of even numbers। आपका कितने स्टोर है, इवन लिस्ट में स्टोर करना था आपको ना। तो मतलब यू हैव टू क्रिएट इवन लिस्ट एम्प्टी लिस्ट, ऑड लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पे आपका इवन लिस्ट डॉट, यस अब आपके पास है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट टू द list at the end। Who can say? Now I need a function which is going to add an element to the list। What should be that function? वो फंक्शन क्या है, ऐसा कौन सा फंक्शन यूज करे जिससे कि वो ऐड करे एलिमेंट को लिस्ट के अंदर। append the number is available in li of x। append function is used to add an element at the end of the list। ठीक है, अब number of elements even numbers is your even list। then पहले आपका even list, उसके बाद number of elements that is your counter ec,
देन टोटल दिखाना है आपको, टोटल ऑफ इवन नंबर्स इज योर ETOT। देन एवरेज दिखाना है आपको, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज योर ETOT by even counter, number of even number is your EC, even counter। ओके, ये सारा चीज कॉपी मारो, अब सारा चीज ऑड के लिए डाल दो। दैट मीन्स नाउ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, टोटल ऑफ ऑड नंबर्स, ये हो गया ऑड। इसीलिए आप वेरिएबल इतना इजी लो जैसे कि आपको 2 मिनट में आप उसको चेंज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ओके, so let's see, enter the elements। I am entering the elements 2, 5, 3, 8, 10। Now let's see, look at this, it is displaying even numbers 2, 8, 10, number of even numbers is 3, sum of the even number is 10, 8 plus 2 is 10 plus 10, 20, then average is this much। Now look at this, it is displaying how many decimal places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इतना डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। What should I use? What should I use to display up to 2 decimal places? क्या यूज करें जो मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगा? What should I use? यहां पे मुझे यूज करना, which function I should use to display up to 2 decimal places? यूज करूं राउंड, राउंड द फर्स्ट पैरामीटर दिस वन, कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, यही नंबर मैं कॉपी कर देता हूं जैसे कि आपको 6.6 ही समझ में आ जाए, 2, 5, यही वाला नंबर। फिर से रन करवा रहा हूं आपके लिए, यहां पे मैंने वैल्यू दे दिया। Look at this, now we got 6.67 instead of 6.66666, like this। So you will get a question like this, which function is used to round the values up to 2 decimal places? Now random, no, random function is used to generate random number between 0 and 1। Okay, random function is used to generate random number between 0 and 1। Okay, तो थोड़ा और डिफिकल्ट प्रोग्राम में चलते हैं अभी। Let me see the next one। Write a program to store name and marks in 3 subjects of n students in a list called STU, where 3 subject marks in a list called marks। तो इसके अंदर STU is a list, उसके अंदर और एक लिस्ट आएगा आपका मार्क्स। इज इट क्लियर? नाउ स्टोर द मार्क्स लिस्ट और द नेस्टेड लिस्ट इन द STU लिस्ट, अभी जो किया था हम लोगों ने। नाउ डिस्प्ले इट लाइक दिस, इन दिस फॉर्मेट आई वांट टू डिस्प्ले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। Everybody has understood the question? If you want to write down the question, write down the question quickly so that we can move towards the program। Now n numbers is required, so first of all I will accept the number int input, enter number of students, enter number of students फर्स्ट आ गया। उसके बाद for c in range n,
अगर n का वैल्यू 3 है दैट मीन्स आई नीड टू एक्सेप्ट 3 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. अगर n का वैल्यू 3 है, नो रिपीट सर. Okay, so now after that what should I do? I will accept the name. I will create a list, empty list, stu is equal to empty list. Now I will say name is equal to input, enter a name, enter a name. Now once the name is entered, then I will accept 3 subject marks, which is saying that it should be a nested list. Mark is equal to empty. So I am saying that mark dot append, directly I am using mark dot append. उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ इनपुट एंटर मैथ मार्क. अब क्या हो रहा है, दिस विल एक्सेप्ट द मार्क and will store or add it at the end of the list, mark list. We can do like this. I can show you another way also. Enter physics mark, enter कंप्यूटर मार्क. तो तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया. अब stu डॉट अपेंड, अपेंड पहले नेम को अपेंड करो. ओके, उसके बाद उसके अंदर आप मार्क को अपेंड करो. नाउ दिस नेस्टेड लिस्ट विल बी इनसाइड द फॉर लूप. इसको फॉर लूप के अंदर रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से जब मार्क्स आएगा, क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है ठीक है, एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं. लुक एट द क्वेश्चन. राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर द नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स. एक नाम और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स. n विल बी एंटर्ड बाय द यूजर. अगर यूजर बोल रहा है 5, तो यू हैव टू स्टोर 5 स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. अगर यूजर बोल रहा है n का वैल्यू 10 है, तो आपको 10 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है. अब किसमें स्टोर करना है, एक लिस्ट में स्टोर करना है जिसका नाम है stu. stu नाम का लिस्ट में आपको स्टोर करना है, stu में. ओके, नाउ वेयर, जिसमें 3 सब्जेक्ट मार्क्स जो आप लोगे इज कॉल्ड ए लिस्ट कॉल्ड मार्क्स. एक लिस्ट लोगे जो आएगा मार्क्स, वो किसके अंदर आएगा, stu लिस्ट के अंदर आएगा. नेस्टेड लिस्ट बोल रहा है. स्टोर द मार्क्स लिस्ट. ये जो मार्क्स लिस्ट आप बनाओगे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए will be a nested list in the stu list. और आपको आउटपुट ऐसा दिखाना. ओके, आप समझ में आया क्वेश्चन? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अब चलो पाइथन के कोड में चलते हैं. अपेंड हो गया मेरा ये सारा. Now appended all the things. Now look at this. When I'm coming out of it, I'm saying print stu. अब ये desired output नहीं आएगा इसमें, ये डायरेक्टली लिस्ट दिखा देगा आपको. ठीक है, आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. बस मैं 2 स्टूडेंट का नाम दे रहा हूँ, राम. ना मार्क्स में दे रहा हूँ यहाँ पे मैथ्स मार्क्स. डायरेक्टली एंट्री करना है मुझे 55, 66, 77, क्योंकि 3 अलग अलग इंडिपेंडेंटली हम लोग मार्क मांग रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट में नहीं मांग रहे हैं. ओके, एंटर अमित. आई एम सेइंग 11, 22, 33. नाउ लुक एट दिस. आई एम गेटिंग द आउटपुट लाइक दिस. देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है आपका. राम इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द नेस्टेड लिस्ट कंटेन्स योर 3 सब्जेक्ट मार्क्स. अमित इज अनदर स्टूडेंट नेम. द नेस्टेड लिस्ट कंटेन्स द 3 सब्जेक्ट मार्क्स. बट इट इज आस्किंग यू टू डिस्प्ले द आउटपुट लाइक दिस. थोड़ा देखो यहाँ पे आउटपुट कैसे मांग रहा है. वो हेडिंग के साथ मांग रहा है, नेम, देन मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर मार्क्स. ओके, तो इसके लिए हमें कैसे आउटपुट दिखाना है, अभी इंडेक्स बेस्ड आपको दिखाना है, एक एक करके दिखाना है. तो नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ यू विल डू दिस. नंबर 1, हाउ आई कैन डिस्प्ले the output like this. Number 1 homework, and number 2 homework is for you. Quickly write down this one.
This one is a homework for all of you. आप इसको करके मेरे व्हाट्सएप में भेज देना. आई विल चेक इट आउट. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, देन आफ्टर दिस और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करेंगे हम लोग. ओके, तो little q. What do you mean by q? I am unable to understand what is this q. I am unable to understand what this q you have given. Little q. Okay, so now my question is that in the next, what you want? डिक्शनरी और या फिर आपको चाहिए लिस्ट प्रोग्राम? क्विकली गिव मी योर कंफर्मेशन व्हाट यू वांट. आपको नेक्स्ट डिक्शनरी चाहिए या फिर लिस्ट प्रोग्राम चाहिए? So okay, fine, we'll opt for this one, dictionary. Now dictionary आपको क्या चाहिए? डिक्शनरी नॉर्मल वन, डिक्शनरी थ्योरी चाहिए या फिर डिक्शनरी प्रोग्राम्स? डायरेक्टली यू वांट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द डिक्शनरी और डायरेक्टली प्रोग्राम? So do one thing, you send me your confirmation in this live video part, comment part, कि आपको क्या चाहिए, डिक्शनरी का थ्योरी देन प्रोग्राम चाहिए या फिर डायरेक्टली आप जैसे किए आज हम लोग व्हाट इज लिस्ट, उसके बाद फ्यू आउटपुट्स, हाउ टू स्टोर द डाटा, ओके, फ्यू थिंग्स वी हैव गिवन. सो वैसे चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली प्रोग्राम चाहिए? क्विकली इफ यू विल सेंड मी योर कंफर्मेशन सो दैट आई विल डू इट अकॉर्डिंगली. सो good night to all of you.